Hello, everyone. Good evening. Okay, everyone. So let's start. Right, due to technical glitch, I need to start like a bit. We are a bit late, but we'll try to complete all the content as per the schedule. In previous class, we discussed about the introduction of our group policy, and we talked about the different types of groups options which are available in the Active Directory services. So let's talk more about the services of GPO, right? So what do you think about group policy and how many way we have to establish our group policy services? What do you think about the group policy, guys? Everyone, can you hear me properly? All okay about like you guys are able to hear me properly, right? Fine, everyone. So I think we can proceed. Like um, the group policy is divided into three different part. Means one is local group policy, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब आप इंडिविजुअल मशीन के ऊपर विंडोज 10 या विंडोज 11 कंप्यूटर है उसके ऊपर आप ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं टू ब्लॉक द एक्सेस ऑफ एनी सर्विसेज, तो इस केस में विच इज कंसीडर एज अ लोकल ग्रुप पॉलिसी. डोमेन ग्रुप पॉलिसी एज पर द नेम सजेस्ट, जिसमें आप अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर पॉलिसी लगाएंगे जिसका इम्पैक्ट जो नंबर ऑफ यूजर्स आपने एडीडीएस में क्रिएट कर रखे हैं उन सभी यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. मीन्स क्लाइंट मशीन्स आर नॉट एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ एनी सर्विसेज जो भी आप पॉलिसी लगाएंगे
उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग द एम्प्लॉयज आर यूजर्स आर नॉट एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ सर्विसेज. Next, let's proceed about the implementation process of Intune with the help of Microsoft Intune. It's a cloud platform, right? माइक्रोसॉफ्ट का एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून जिसकी हेल्प से वी आर एबल टू अप्लाई द पॉलिसी एंड दिस पॉलिसी इज कंसीडर एज ए यू कैन कंसीडर इट एज ए मॉडर्न ग्रुप पॉलिसी जिसमें आप वर्क ग्रुप और डोमेन बेस्ड दोनों मशीनों के ऊपर ग्रुप पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट जीपीओ प्रेसिडेंस क्योंकि अगला पॉइंट जो है अपने पास वो है ग्रुप पॉलिसी प्रेसिडेंस. And cheaper precedence is basically considered as a priority, जिसमें आप you can say that LSD or O, local, then sites और फिर उसके बाद domain and then लास्ट में organizational unit. इसमें जो हायर प्रायोरिटी होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ही होती है एंड देन लोवेस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो आपका यू कैन कंसीडर इट एज ए लोकल हाई और ये आपका सबसे लो प्रायोरिटी पे जाता है. मीन्स वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि यू नो दैट जो कॉन्सेप्ट है अपने पास राइट जो जो कॉन्सेप्ट है ग्रुप पॉलिसी के केस में द ग्रुप पॉलिसी इज बेसिकली अप्लीकेबल फॉर मीन्स ओनली कंटेनर्स. हम इसको सिर्फ कंटेनर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन नॉट अप्लाई इट टू एनी यूजर्स या किसी ग्रुप के ऊपर पॉलिसी नहीं लगा सकते. आपको कंटेनर्स में रखना पड़ेगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे अपने पास एक डोमेन है. डोमेन आपने बनाया विद नेम ऑफ क्लास डॉट कॉम राइट. दिस इज योर डोमेन कंट्रोलर. क्लास डॉट कॉम के नाम से आपने डोमेन बनाया. जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डायरेक्टली इस क्लास डॉट कॉम को कनेक्ट रहेंगे राइट. ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लाइक जितने भी यूजर्स हैं वो आपके डोमेन पे रहेंगे. ग्रुप्स भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर्स भी. Apart from these objects, we are able to find another type of containers, sites, और लास्ट में आप यहाँ पे you can manage organizational unit. जो जीपीओ अप्लाई करने का तरीका है या जो जीपीओ एप्लीकेबल है, which are applicable for only मेन कंटेनर जिसमें आपका डोमेन आ जाता है, आप इस पे जीपीओ अप्लाई कर सकते हैं. आप साइट पे जीपीओ अप्लाई की जा सकती है एंड वी कैन अप्लाई द पॉलिसी टू द container OU. So these all are the containers that we can apply. अगर आप पॉलिसी अप्लाई करते हैं मेन कंटेनर पे लाइक क्लास डॉट कॉम पे देन योर पॉलिसी विल बी अप्लीकेबल फॉर जितने भी यूजर्स हैं चाहे वो यूजर डायरेक्टली कनेक्टेड है या यूजर्स आर पार्ट ऑफ एनी ग्रुप या कंप्यूटर या किसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या साइट्स का पार्ट है. सो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द यूजर्स राइट. वो पॉलिसी आपके सभी यूजर्स पे एप्लीकेबल होगी जो यूजर ओयू के अंदर है साइट में है या डायरेक्टली कनेक्टेड विद द क्लास डॉट कॉम. योर पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवन राइट. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन अप्लाई द पॉलिसी. ये क्लियर है कि वी आर एबल टू अप्लाई द पॉलिसी ओनली एंड ओनली टू द कंटेनर. हम यूजर्स के ऊपर उन पॉलिसीज को अप्लाई नहीं कर सकते राइट. सो आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल हाउ वी कैन सेट अप द ग्रुप पॉलिसी यूजिंग आवर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज. इसके लिए यू नो वेरी वेल अबाउट वी नीड टू सेट अप और कनेक्ट with our laptop and share my screen. Now, this is our domain controller or client machine because to perform the all practicals, we can go with this way.
Okay, actually, I converted my machine from workgroup to domain, so we must need to make it part of domain controller to get the access of our services. ncpa.cpl ethernet का port open कर लेते हैं, and let me check the IP address that we are getting. 152 162, right? This is the IP address. Okay, 162. Let me check again. I'm trying to like convert our machine from workgroup to domain. So make sure your machine is not connected with any cloud platform या किसी दूसरे domain controller पे आपकी machine जुड़ी नहीं होनी चाहिए. And you just need to remove it from any specific domain and try to connect it again. Okay, let me try to connect it again. Okay, now we converted it and it become a part of our domain controller. अब हम इसमें GPO का पार्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं. We just need to apply the group policy to this particular. पहले डोमेन पे ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करते हैं and then we can proceed and check कि किस तरीके से ये हमारे यूजर पे इम्पैक्ट करता है. Going back, select our user account, tools पे क्लिक करेंगे and we need to open group policy management. You can also open group policy with the help of command gpmc.msc and you will get the access of group policy. It look like this. हमने अपने इस डोमेन कंट्रोलर पे मल्टीपल यूजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड. वी क्रिएटेड a number of users and we can find the number of OU and domain controller. See, this is class.com and class.com के अंदर एक हमने OU क्रिएट किया है विद नेम ऑफ क्लास OU. दोनों ही कंटेनर हैं और अगर आपके OU के अंदर कोई यूजर्स हैं और आप अपने OU के ऊपर पॉलिसी लगा रहे हैं तो द पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट यूजर्स ओनली. हम यहाँ पे एक पॉलिसी लगाने वाले हैं डायरेक्टली टू द डोमेन कंट्रोलर जो हमारा क्लास डॉट कॉम है उस पे हम एक पॉलिसी लगाएंगे एंड लेट्स सी कि वो पॉलिसी कितने यूजर्स के लिए एप्लीकेबल होगी. राइट क्लिक ऑन योर जी कंटेनर एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक फर्स्ट ऑप्शन. यहाँ पे जो भी नेम आप देना चाहते हैं जस्ट नीड टू टाइप द नेम. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ ब्लॉक कंट्रोल पैनल. ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द नेम ऑफ आवर ग्रुप पॉलिसी विद नेम ऑफ ब्लॉक कंट्रोल पैनल. द पॉलिसी इज फुली ब्लैंक. हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. सेलेक्ट, यू कैन डिसाइड योर ऑन नेम क्योंकि दिस इज द आई एम यूजिंग दिस इज फॉर ओनली एग्जांपल पर्पस. सो यू कैन प्रोसीड विद दिस ऑप्शन. राइट क्लिक, go to the edit option and select user configuration and computer configuration. राइट, दो ऑप्शन है, दोनों में पॉलिसीज और प्रेफरेंसेस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. पहला है यूजर कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड इज कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन.
And both containers, yani both folders are contain the options related to uh, like policies and preferences. So please click on policies, user configuration ke andar. Again, we are able to find three options. One is software setting, second is Windows setting, and last one is administrative templates. I'm going to open administrative templates. We decided to block the access of control panel, so please open